Hello students, welcome to BookmarksEducare, where education touches excellence. Merry Christmas to all of you from BookmarksEducare team, and today we will going to discuss about a very important topic of the Magnetism chapter of class 12, and that is the Ampere's Circuital Law and its applications. Well, so from this chapter, we will see various applications of Ampere's Circuital Law and its necessary key elements that will be very important for your upcoming board examination. Okay, so without delaying any time, just begin our discussion. Let's see. Well, one thing that I am pretty much sure about that तुम लोगों ने अभी बोर्ड प्रिपरेशन जब आ गया है, तुम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म ये चैप्टर्स तुम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट there are some certain key elements that would be very specific. If you remember it, तुम इसको अगर बहुत अच्छी तरीके से याद रखते हो तो एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर से जो जो क्वेश्चंस आएंगे उसको तुम बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. सी वन थिंग, एम्पियर सर्किटल लॉ, गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो गाउस लॉ तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इट इज, वी कैन से दैट इट इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द कूलम्स लॉ. ओके, this is the extended version of the Coulomb's law, and Ampere Circuital Law, we can say that Ampere Circuital Law that will be the extended version of the Biot-Savart's law. ठीक है, मैं इसके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन में आ रहा हूं. उससे पहले see, we can say that Gauss law, this is the alternative for the Coulomb's law. मैंने अभी इसको कहा था. Similarly, Ampere Circuital Law is the alternative form of the Biot-Savart's law. एक बार इसको देखते हैं, ठीक है. Gauss law, Gauss law के लिए तुमने क्या पढ़ा था? What is the Gauss law basically? That relates to the electric flask. That electric flask which is equal to EDS, where this E is the electric field and ds, that is the infinitesimal surface area. हम लोग गाउस लॉ में क्या करते थे यूजुअली? गाउस लॉ में we used to consider about a imaginary surface, an imaginary plane, an imaginary surface which is enclosing certain charges. Okay, so this form this is basically the Q enclosed by epsilon naught. This epsilon naught is the permittivity of free space. कंसेप्ट क्या था यहां पे कि अगर एक चार्ज सपोज Q कोई एक पर्टिकुलर सरफेस से एनक्लोज्ड है,
ठीक है, अगर कोई एक चार्ज, एक पर्टिकुलर कोई एक, ये दिस surface is known as the Gaussian surface. Okay, if this charge q, if it is uniformly distributed, we can consider that for a solid sphere. अगर तुम q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वी कंसिडर दैट we basically consider that this charge can be, you can consider it that charge is localized at the center. Okay, and from this central part the electric lines of forces, they are becoming perpendicular to the surface, right? So if I consider this surface, this sphere is of radius r. Okay, so EDS, considering this is an uniform field, uniform means is constant throughout the medium. So considering it as a uniform electric field, you can take this constant out, that is the q enclosed by epsilon naught, where this integration, अगर इस स्फीयर का रेडियस अगर r है तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना बन जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा 4 pi r square, that is q enclosed by epsilon naught, और E तुम्हारा हो जाएगा q enclosed 4 pi epsilon naught r square. मैंने इसको थोड़े से डिफरेंट तरीके से मैंने इसको लिखा है क्योंकि तुम लोगों को इसको रिलेट करने में तुमको आसानी होगा. एंड और ये क्विक रिवीजन भी हो जा रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का. ठीक है, इसके बाद ही डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे मैग्नेटिज्म पार्ट में. जो कूलम फोर्स था, ये कूलम फोर्स कितना था? इफ दिस चार्ज q naught, this is basically the test charge, and this q enclosed, you can consider it as a source charge. क्यों ये source charge है? Because इसके वजह से, due to this charge an electric field has been created, in which you are basically bringing this test charge from an infinite distance. Okay, suppose at a point r, तो ये जो कूलम फोर्स, ये कितना हो जाएगा? हम लोगों को पता है ये कूलम फोर्स बेसिकली दिस विल करस्पॉन्ड टू दिस अमाउंट. दिस पार्ट, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, that is q epsilon naught, q that is enclosed divided by r square. And that's why मैं ये बात बोल रहा था कि basically the Gauss law, it is the alternative form of Coulomb's law. अब चलो इसमें देखते हैं कि एम्पियर्स लॉ को कैसे हम रिलेट करें, इसके साथ एम्पियर्स लॉ को कैसे रिलेट किया जा सकता है. Ampere's law is the alternative form of the Biot-Savart's law. अब Ampere's law क्या बोल रहा है? Ampere's law, it is basically the line integration of a magnetic field. If you are taking a closed contour, ठीक है, this closed contour, upon this closed contour, suppose of length, total length of L, ठीक है, यहां पे एक इनफाइनाइटेसिमल हम लोग लेंथ ले रहे हैं, सपोज दिस इज dl, एंड अपॉन दिस क्लोज्ड कंटूर इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल, यू कैन सी दैट द डायरेक्शन ऑफ dl एंड b बोथ आर टेंजेंशियल. सो पर यूनिट लेंथ अगर b यहां पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है तो टोटल ये जो लाइन है इसके लिए तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा? योर लाइन इंटीग्रेशन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I, where
I is the, sorry, it is the current enclosed, it is the current enclosed by Amperian loop, and this mu naught, this corresponds to the permeability of free space, that is the free space permeability. अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, गाउस लॉ के साथ. Gauss law that correspond to EDS Q enclosed by epsilon naught. देखो दोनों इक्वेशन को एक साथ में देखो, यहां पे बेसिकली लाइन इंटीग्रेशन हो रहा है. दिस इज लाइन इंटीग्रल, and in this case we are taking surface integral. In this case charge is enclosed, in this case current is enclosed. ठीक है, I am not telling that these two laws are same, I am not telling that. This is certain kind of similarity that you can observe in this case. ठीक है, अगर इसको ऐसे पढ़ते हो, क्योंकि मैंने ये देखा है अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, तुम लोगों से ये हो जाता है कि तुम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक को अलग से पढ़ रहे हो, मैग्नेटिज्म को अलग से पढ़ रहे हो. अगर तुम दोनों को, ये जो पार्ट्स हैं, इसको इन दोनों को अगर तुम ज्वाइन करके पढ़ोगे, जो हमारे जो मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएंगे, ठीक है, जो मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे हम लोग तुमको ये चीज समझा देंगे कि कैसे इलेक्ट्रोफिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पार्ट है और मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, इसको कैसे क्लब करके तुम लोग पढ़ सकते हो. तो अगर जितना इसको मर्ज करके पढ़ोगे तो उतना ज्यादा समझने में आसानी होगा. ठीक है, ओके. एंड वन थिंग इट इज दैट, one thing that is our mentorship program is live now, and from the month of January, from the coming new year, we are coming with exciting plans and offers for you students, and that is a big surprise. We will not reveal it now, we will reveal it later to you. That will be the big new year surprise for you people. Okay guys, okay. So dekho, this EDS, this is the Gauss law and this is the Ampere's law. इन दोनों में एक सिमिलैरिटी तुमको दिख रहा है, वहां पे यहाँ पे करंट एनक्लोज था, यहाँ पे चार्ज एनक्लोज. ठीक है, एंड दिस वाज आवर डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ. इट कैन बी डिफाइंड एज द लाइन इंटीग्रल. हम लोगों ने देखा है, दिस इज द लाइन इंटीग्रल बेसिकली ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड लूप व्हिच इज इक्वल टू द टोटल करंट. टोटल करंट, ये चीज याद रखना बच्चों, टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप. ये जो लूप है ना, बेसिकली जैसे गाउस लॉ में, गाउस लॉ के अंदर जो लूप था, वो सॉरी जो सरफेस था, दैट वाज, देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सरफेस. ये एक इमेजिनरी सरफेस है. जैसे इसके तरीके से तुम बहुत सारे केसेस के लिए एप्लीकेशन वहां पे तुम लोग देखे हो, और इससे रिलेटेड पहले एक वीडियो भी है, गाउस लॉ एंड एप्लीकेशन. यूट्यूब में जाओ, हमारे जो यूट्यूब में चैनल है बुकमार्क्स एडुकेयर का, वहां पे फिजिक्स का ये वीडियो अवेलेबल है, एंड दिस इज डन बाय द सप्तक सर. ओके, वहां पे तुम लोग मिलेगा कि यहाँ पे गाउस लॉ का वेरियस एप्लीकेशंस क्या है, एंड यहाँ पे दैट इज द करंट एनक्लोज्ड बाय अ लाइन. देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लाइन. This is just a geometrical representation. This is just a geometrical representation. This is imaginary. And इससे सुविधा क्या होता है? What is this basically the usage? You can say that utility or the purpose of this Ampere Circuital Law. Biot-Savart law से हम लोग बहुत सारे केसेस में, जैसे कि कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो उसके लिए जो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो कितना निकालना है, ये तुम कर सकते हो. बट दैट इज अ वेरी एक्सटेंसिव इक्वेशंस दैट यू हैव टू डन.
But if you, instead of using Biot-Savart's law, if you are using Ampere Circuital Law, then for the various complex circuits, various complex phenomena के लिए, जैसे कि that I will discuss, I will show it to you, जैसे कि for the solenoids, for the toroids, ठीक है, इसके लिए जो कैलकुलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, ये निकालने में बहुत आसानी हो जाएगा और ये बहुत, दैट विल बी वेरी इजियर फॉर यू. ओके गाइज, ओके. सो दिस इज द थिंग. नाउ that is the similarity of Gauss law that we have already seen. There are certain similarities. Now a very important thing, that how we are telling that this B magnetic field, the line integral of this magnetic field, that is equal to mu naught I. ये हम लोग कैसे कह सकते हैं? देखो एक चीज, if you consider about a long straight wire, for a long straight wire which is carrying the current I, we can consider a Amperian loop around it. ठीक है, सपोज पर्टिकुलरली देखो, अगर ये कंडक्टर के यहां से सपोज P एक यहां पे पॉइंट है कोई, और यहां पर अगर तुमको जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर तुमको ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकालना है, सपोज from this current carrying wire the distance is r. If you want to evaluate that, then we know that by using Biot-Savart's law we can arrive that magnetic field at r distance. ये कितना हो जाता है बच्चों? That magnetic field at r distance, that will become mu naught I divided by 2 pi r, right? Mu naught I divided by 2 pi r. Now if I consider this B as a uniform magnetic field, as a uniform magnetic field, यहां पे देखो, suppose this is the direction of the magnetic field and I am taking a very infinitesimal length dl over here, so that line integral will be this amount. हमने यहां पे डॉट प्रोडक्ट लिया है और हम लोगों को पता है for the dot product a cos term that will appear, that is b dl cos theta. but यहां पे अगर dl, जो dl और b अगर सेम डिस्टेंस में है, because it is over a line and they are both tangential, if we consider that they are at this, they are along the same distance, so इसके ये दोनों के अंदर B और DL के अंदर यहाँ पे एंगल कितने बनेंगे? That angle will be 0 degree, and we know that cos 0 degree that is equal to 1, right? So this will simply become BDL. अब देखो, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है. लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए we know that the magnetic field is by this amount, and that we have derived from the Biot-Savart's law. Now see, this B is uniform, this is constant. I can take this out from this integration. So this will correspond to this B, that is mu naught I divided by 2 pi r, और dl अगर देखोगे तो it is, इसका अगर टोटल इंटीग्रेशन करोगे तो दिस इज बेसिकली अ सर्कल,
दिस इज बेसिकली ए सर्कल ऑफ रेडियस r, तो इसका जो टोटल इंटीग्रेशन होगा, ये टोटल इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, दैट विल आल्सो बिकम 2 pi r. So 2 pi r and 2 pi r will cancel each other, hence we can write this b dl that is equal to mu naught I, hence your Ampere Circuital Law is proved. Okay, I think this is clear right now. Now okay, this already I have discussed. First of all देखो यहाँ पे कुछ चीज ध्यान में रखना है, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं. प्रीवियस ईयर अगर देखोगे तो बहुत बार ये सब क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं कि एमसीक्यू में डाल दिया कोई एक क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा देख लो. एम्पियर सर्किटल लॉ, इट इज डिपेंडेंट ऑन बायो-सावर्ट्स लॉ. बायो-सावर्ट्स लॉ क्या था? बायो-सावर्ट्स लॉ में हम लोग क्या कंसीडर किए थे, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोपोर्शनल टू आई. ठीक है, करंट जितना बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट उतना ही बढ़ेगा. ओके, देन if you are considering this kind of a conductor which is carrying current I, dl is basically the small distance, and from this small distance dl, if I taking this distance r, it will proportional to the angle sin theta angle between dl and r. Suppose in this point, for this point at p, you are trying to find the magnetic field, that will be proportional to sin theta and inversely proportional to, square inversely proportional to the distance from this point. So if I combine this, I will get, if I combine this, I will get b is proportional to I dl sin theta by r square. And if I remove this factor, the constant will appear, that is mu naught 4 pi I dl sin theta divided by r square. इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, and that is basically your बायो-सावर्ट्स लॉ. So your Ampere Circuital Law, that is dependent on the बायो-सावर्ट्स लॉ. मैंने ये पहले ही कहा था कि बायो-सावर्ट्स लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन है, that is the sorry, that is the alternative of Ampere Circuital, sorry, so that is the alternative of Bayo-Savart's law, and it can be derived from the Bayo-Savart's law. Okay, both Ampere Circuital law and Bayo-Savart's law relates to the magnetic effects of current. Magnetic effects of current, जैसे कोई एक कंडक्टर के अंदर अगर कोई करंट फ्लो होगा तो ऑटोमेटिकली यू विल ऑब्जर्व दैट देयर विल बी क्रिएशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर. ओके, Ampere Circuital Law and Gauss Law both relates to the physical quantity in the periphery of the other physical quantity, that is the source charge. Exactly. तुम जब Gauss law के लिए जब डिटरमाइन कर रहे थे, you are taking that a source charge, and due to this source charge there was a creation of a field. From infinite distance you used to take a test charge at this point. Suppose ये R है, basically this is the periphery. ठीक है, और ये it is possible that it is of infinite length. Infinite से यहाँ पे ला रहे हो, यहाँ पे this is the periphery of this field, यहाँ तक ला रहे हो, यहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है. और ये Coulomb's law के जरिए ये automatically we have already derived this, that is F equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught Q divided by R square. This is your Coulomb's law. And in case of the Bayo-Savart's law as well, and in case of the in Ampere Circuital Law, we have already seen that if we apply the Ampere's thumb rule, that this curl is basically defining the direction, the orientation of the magnetic field, and it is this thumb basically defining the direction of the current. So if the current is in the upward direction,
So you will observe that your magnetic field, these are anti-clockwise in nature, ठीक है। एंड यहां पर भी तुम वही पेरीफेरी तक, यहाँ पे एक सर्टेन डिस्टेंस पे, इस फील्ड के एक सर्टेन डिस्टेंस पे यहां पे तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, ओके। एम्पियर सर्किटल लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेडी करंट्स। अब बात है स्टेडी करंट क्या है, व्हाट इज स्टेडी करंट। हम इसके डिस्कशन में नहीं जाएंगे। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दैट फॉर डीसी करंट्स एम्पियर सर्किटल लॉ इज एप्लीकेबल, बट इन केस ऑफ द एसी करंट्स एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते, बिकॉज एसी करंट्स में अगर देखोगे तो एसी करंट में you will observe there is a time variation. If t is the time, there you will observe a time variation in case of the AC currents. टाइम के साथ ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑल्टर कर रहा है। तो एसी करंट्स के लिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि एम्पियर सर्किटल लॉ वहां पे अप्लाई नहीं होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ वहां पे अप्लाई होगा, लेकिन we will not tell that, we will not say that this is exactly the Ampere circuital law. We will say that this is the Ampere's Maxwell equation basically, and that is the modified form of the Ampere circuital law. यहाँ पे Maxwell's equation दिया था, and there comes the concept of displacement current. ये याद रखना बच्चों, तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के का भी ये पार्ट है, बिकॉज तुम अगर कैपेसिटर में देखोगे तो कैपेसिटर ये देख सकते हो कि कैपेसिटर एसी करंट को अलाउ कर देता है, बट इट एक्चुअली ब्लॉक्स द डीसी करंट। अब एसी करंट को ऐसे ही अलाउ नहीं करेगा, एसी करंट तो अल्टरनेटिंग है, डीसी को क्यों ब्लॉक कर रहा है, एसी को क्यों अलाउ कर दे रहा है, एंड दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ था उस समय, तो देयर वाज सर्टेन गैप, एम्पियर सर्किटल लॉ वाज अनएबल टू एक्सप्लेन दैट कि व्हाई these AC currents are allowed and DC current is blocked basically. And in this case what happened, Maxwell comes into the picture and Maxwell came up with a concept of displacement current. तो इसको हम तुम लोगों को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इसके बारे में हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में, कि ये कैसे डिफाइन हो रहा है कि मैक्सवेल जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, this displacement current has the form of epsilon naught d phi e dt. हम लोगों के पास जो एम्पियर सर्किटल लॉ था, एम्पियर सर्किटल लॉ दैट यूज्ड टू बी म्यू नॉट आई, मैक्सवेल ने क्या किया, बस इसके साथ एक टर्म ऐड कर दिया, और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बन गया एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। एंड दिस इज द form of displacement current. ठीक है, दिस इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये एक चीज याद रखना। एंड एम्पियर सर्किटल लॉ इज मोर यूजफुल अंडर सिमेट्रिकल कंडीशंस। द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन फॉर डिफाइनिंग द मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलिनॉइड्स एंड टॉरॉइड्स, ये मैंने पहले ही बताया था कि सोलिनॉइड्स और टॉरॉइड्स, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाले, ये निकालना बहुत आसानी हो जाएगा, अब वही देखेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ द सोलिनॉइड। अब देखो सोलिनॉइड्स, व्हाट आर बेसिकली द सोलिनॉइड्स? Solenoids, we can say that these are the insulated copper wires winded through a certain kind of magnetic material. Magnetic material नहीं भी हो सकता है, hollow भी हो सकता है। तो these are the insulated
copper wires, they are oriented, or they have been instrumented in a helical formation, in a helix. You can see that these are the insulated copper wires. Okay? These are the insulated copper wires and they are in a helical formation. And in this case, we are considering about the long solenoid. ये long solenoid क्या है? Suppose if L, that is the length of solenoid, और यहां पे देख पा रहे हो there is a circular formation, so there must be the certain amount of radius. So if I consider R is the radius long solenoid का मतलब है when this R is very very small than L. ठीक है, this R is very very smaller than A, and we can consider that the total number of turns for a solenoid that is the N. Okay, that is the N. So number of turns per unit length that will be capital N by L. Okay, आगे बढ़ते हैं अभी. ठीक है, अब देखो इस केस में how we will apply the Ampere Circuital Law. Just see, I am considering first of all the flow of the current. यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे हम जो एम्पियर्स का जो राइट हैंड थंब रूल है, आई एम यूजिंग द थंब रूल. देखो this curl is basically representing the direction of the current. Okay, direction of the current. If this curl is representing the direction of the current, then your thumb will represent the direction of north pole. If this curl is representing direction of the current, तो thumb will represent the north pole. अब देखो इस साइड में तुम्हारा नॉर्थ पोल बन रहा है, इस साइड में तुम्हारा साउथ पोल बन रहा है. तुम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों? नॉर्थ पोल से क्या होता है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, दैट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे विल इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दिस विल एंटर इनटू द साउथ पोल. देखो यहां पे वही डायरेक्शन में. ठीक है, दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे आर एंटरिंग इनटू द साउथ पोल. राइट, अब देखो अंदर में देयर विल बी द क्रिएशन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इफ आई कंसिडर अ point, suppose a point Q over here, that is the external point. In this point I will get no magnetic field over here. Okay, Q magnetic field यहाँ पे नहीं मिलेगा. If I consider this is the axis of the solenoid, so there will be no component, no perpendicular component of magnetic field. No perpendicular component of magnetic field, and due to this reason we will not get any kind of magnetic field over here, over this exterior point. Okay, and if I bring the Amperian loop over here right now, suppose this is your Amperian loop. ठीक है, this is your Amperian loop of A, B, C, D. ठीक है, if I current is flowing into this circuit, ठीक है, I am considering the length of this loop AB is equal to L.
length of AB that is equal to L, and in this length N is the number of turns per unit length thereby तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना बनेगा? द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट विल correspond to NL. Okay, now see, अगर यहां पे हम मैग्नेटिक एम्पियर सर्किटल लॉ को यहां पे अगर हम प्रेजेंट करते हैं, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम A integration from A एक मिनट, this is a closed contour basically, so BDL that can be written as, देखो हम इसको चार हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम A to B BDL प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B to C BDL प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C to D BDL plus integration of D to A BDL. Put the vector sign over here. ठीक है, अब देखो यहां पे देखते हैं एक एक करके. फ्रॉम B to C, इन दिस केस फ्रॉम B to C, यहां पे अगर ध्यान से देखोगे कि इस पॉइंट से ये जो वायर्स है ये बाहर आ रहा है और इस पॉइंट से यहां पे अंदर जा रहा है, तो द क्रिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां से बाहर आ रहा है दे विल बी लाइक दिस. ठीक है, यहां पे जो मैग्नेटिक B to C के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, सपोज वो या तो इस प्लेन से, मतलब ये जो बोर्ड तुमको दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड से या तो परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ, लेकिन जो ये वाला लेंथ है DL वाला जो लेंथ है BC टुवर्ड्स द BC, जो ये लेंथ है बेसिकली ये B ये लेंथ के साथ इट इज क्रिएटिंग अ परपेंडिकुलर 90 डिग्री. सो इन दिस केस फ्रॉम B to C, the angle between B and DL that is 90 degree, and for 90 degree what will happen? This will become 0. Okay, this will become 0. Now see, from C to D, that means in this part from C to D, मैंने ये पहले ही मेंशन किया था, if this for this Q point as it is outside this solenoid, in this case you will get no magnetic effect, there will be no magnetic effect, and for that reason this integration from C to D BDL that also correspond to 0. ठीक है, यहां पे देखते हैं D2 है, अगेन द सेम केस, इधर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड और इनवर्ड, एंड
जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज इस साइड में या तो इस साइड में सपोज, और ये जो लाइन है, this is basically the line will be in this direction. So again this perpendicularity, this orthogonality that has been created, there will be a 90-degree difference between them. 90-degree angle will be created between this B and DL. So for that reason, from D to A, this part from D to A, this will again become cos 90 and will become 0. So as a whole we can say that, look very carefully, only this part is existing, only this is the existing part. So we can write integration of B dl over a closed contour for a solenoid that is just only from A to B, B dl. Okay, and inside the, and this I am calculating the magnetic field inside the solenoid. Okay, and B, that is uniform in nature. So I can easily take this B out of the integration, A to B dl, and पहले ही हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिया था कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल टू L. ओके, नाउ for a single number of turn, for a unit, for a single number of turn, according to the Ampere's law, your magnetic field is mu naught I. हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एम्पेरियन लूप के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो रहे हैं? That is NL, and due to this the magnetic field that will be mu naught NLI. We have just multiplied this, and that will be equal to BL equals to mu naught NLI, and from both the sides LL will be cancelled out, they will cancel each other, and you can observe that mu naught NI. ठीक है, this is the case, and by using this form you can, and this is basically the inside, that is the ये जो अंदर में, भीतर में जो एक्सिस के ऊपर, सोलिनॉइड को जो एक्सिस के ऊपर अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, दिस इज द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, एंड बाय यूजिंग द सेम प्रिंसिपल, this same principle we can easily derive what will be the magnetic field at the end of the solenoid. अब देखो इसको कैसे समझते हैं, एक तो बायो-सावर्ट्स लॉ से ये आ जाएगा, लेकिन इसको हम और इजी कर देते हैं. ये तुम्हारा सोलिनॉइड था, राइट? अब यहां पे एक सिमेट्रिसिटी देखते हैं, ये इनसाइड पॉइंट में है. अगर एंड पॉइंट में देखोगे तो दो अलग अलग, दो सिमेट्रिक सोलिनॉइड्स बन जाएंगे. ठीक है, दो सिमेट्रिक सोलिनॉइड्स बन जाएंगे. अगर ये एक अलग सोलिनॉइड बना तो ये एक्चुअली टोटल लेंथ अगर यहां पे L है, सो दिस फॉर दिस पार्ट, इफ आई एम जस्ट symmetrically I am dividing this solenoid, so this solenoid will have a length of L by 2. This is half the solenoid and this is half the solenoid. So ये जो पहला, ये जो एंड है, ये जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, this end will provide the same amount of magnetic field. So what we can write? We can write B inside, that is equal to B end plus B end. ये दोनों को मिला के ही ना इनसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ओके, सो 2B end that is equal to B inside, और B end that is equal to half B inside, and B end that is equal to half mu naught NI.
So at the end of the solenoid this will be the magnetic field. इसको याद करके रखना. This is very important, very very important. अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, if this point is B, this is the origin and that correspond to the distance. देखो B पॉइंट में एक्सिस के ऊपर यहां पे फ्लैट कर्व होगा, ये B है, इसका अगर हाफ देखोगे दैट इज B by 2, exactly B in by 2. There will be exact decline at the end. This is the end. यहां पर भी this is the end of the solenoid. So this will be the graphical representation for this. Okay, this will be the graphical representation. Now sorry, now for toroids देख लेते हैं. ये टॉरॉइड क्या है? बेसिकली अगर तुम एक सोलिनॉइड को बेंड करके इफ यू आर गिविंग इट अ सर्कुलर शेप, देन it is exactly becoming a shape of this circular helical format and we call it as a toroid. टॉरॉइड में यहां पे अगर देखोगे there will be the magnetic field that will be created. It will be according to the by viewing this direction of the current. We can say that यहां पे देखो, यहां पे Ampere's right hand thumb rule यहां पे यूज करो. The magnetic field inside the toroid that will be clockwise in nature. ठीक है, तुम यहां पे हम लोग यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, एक तो देख सकते हैं भीतर में कोई एक पॉइंट में, ठीक है, इनसाइड अ पॉइंट. सपोज फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे हम लोग तीन, एक सेकेंड इसको ऐसे करते हैं. वी आर टेकिंग 3 Amperian loops. 3 Amperian loops. Suppose this is inside. According to the average radius, this is the other second Amperian loop, like this. Second Amperian loop. And ये टॉरॉइड के बाहर we are taking a third Amperian loop, right? From the central point, this distance is r and this is inside. Inside में तो hollow है, ठीक है, तो inside में अगर hollow है तो if I use the Ampere Circuital Law over here, ये किसके लिए? For inside of radius r, there is no current enclosed. That means B 2 pi r, take it as r1, b 2 pi r1 that is equal to 0 and that exactly becomes b equals to 0. So in the first case inside में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा. अब सेकेंड केस में देखो, if I consider for this Amperian loop, if this is the average radius, if R2 is the average radius, of toroid, and if n is the total number of turns, if n is the total number of turns, so in this case we can write this b 2 pi r2 that is equal to mu naught ni, and b will become mu naught ni divided by 2 pi r2. ये 2 pi r2 बेसिकली क्या है? दिस इज
हम लोगों ने तो एक सोलिनॉइड को बेंड करके इसको टॉर्वेड बनाया था। अगर इसको तुम ऐसे खोल दोगे, ठीक है, इफ यू मेक इट अ स्ट्रेट, देन इट जस्ट बिकम अ लाइन, जस्ट बिकम अ लेंथ. So 2 pi r, this is basically the circumference, this is basically the length, and along this length there are a number of coils which are winded up, ठीक है, which has been winded up. So don't you think that this part, this n divided by 2 pi r2, this will become the number of turns per unit coil, mu naught ni, जस्ट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट कॉइल, ठीक है. अब इसके एक्सटीरियर वाला पॉइंट में देखते हैं. ये सबसे बाहर वाला जो एम्पियरियन लूप था, दिस इज द एक्सटीरियर पॉइंट. डोंट यू थिंक दैट कि यहां पे तो कोई करंट ही एनक्लोज नहीं है, देयर इज नो करंट, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली इनसाइड. सो इन द आउटवर्ड डायरेक्शन दिस विल सिंपली बिकम्स दिस BDL. This BDL, that will be simply 0 as B equals to 0, right? Now there are certain points that you have to remember regarding the toroid. देखो, magnetic field inside a toroidal solenoid is independent of radius. इस चीज को देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो फॉर्म लिखा है, यहाँ पे कहीं रेडियस का टर्म है, R2 independent, and this depends on the number of turns per unit length, right? The magnetic field inside the toroid has constant magnitude and tangential at every point. There, okay. An ideal toroid is exactly circular and field external to the toroid is 0, जैसे कि यहां पे हुआ था. हम लोगों के यहाँ पे जो टॉरवेट था, we considered that for convenience we considered it as an exact circle. But if it is not, in our real life we can observe, we can come across toroids like they are not exactly circular. In this case, ये जो outside वाला जो external field जो हम लोगों ने यहाँ पे 0 कर लिया है, तो this outside magnetic field that will not become 0. A little bit amount of magnetic field also will be present. Okay, just remember these certain points. Okay, application of Ampere Circuital Law for long straight cylindrical conductors. अब देखो, this is considered a cylindrical conductor like this. Okay, a cylindrical conductor of radius A. Suppose I is the current which is flowing inside the conductor. Now हम इसके बाहर में एक एम्पियरियन लूप को कंसीडर कर रहे हैं, considering an ampere loop outside, and this has the radius of R, ठीक है. Suppose this has the radius R. So if I apply this, if I apply the Ampere's law, so what I will get, this 2 pi R, that will be equivalent to mu naught I, or rather B will be mu naught I by 2 pi R, ठीक है. This will be the case. Now see one thing, if I am considering a point inside, it like this, of radius small r, ठीक है, of radius small r. If I am considering a point like this,
So in this case ये जो एम्पेरियन लूप है, this Amperian loop will not enclose the same amount of current. In this case we can say that this loop, that the current that will be enclosed by this will be that will just be a fraction of this part. Okay, that is I pi r square, and from this we can write that will be I divided by pi a square into pi r square, or pi it will be get cancel each other, and we will have this. Okay, so in this case okay, ओके वन थिंग, यहाँ पे अगर ये इस पार्ट को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, सो दिस विल बी b विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, राइट. ये एक्सपोनेंशियली यहाँ पे वैरी कर रहा है, और यहाँ पे देखते हैं दिस i प्राइम इक्वल्स टू i r स्क्वायर a स्क्वायर. नाउ if I apply the Ampere Circuital Law over here, that b dl prime that will be mu naught I prime. ये I prime और I सेम नहीं है, क्योंकि ये जो एम्पेरियन लूप है, पहले जो R वाला पार्ट था ये पूरा I करंट को एनक्लोज कर रहा था, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ये जो एम्पेरियन लूप है ये कम करंट एनक्लोज करेगा. एंड फॉर दिस पर्पस b dl prime that will be mu naught I r square divided by a square. I प्राइम को मैंने इस पार्ट से सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट. अब देखो this B is the uniform magnetic field and that will be 2 pi r, that is mu naught I r square divided by a square. The B will be yes mu naught I r square a square 2 pi r, and from this r and r square they will cancel each other and we will get 2 pi a square into r. This a is the constant. यहाँ पे वेरिएशन देखते हैं. This b, if mu naught I 2 pi and a square, all these factors, if they are constants, so we can write b is proportional to r. इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, this b is your magnetic field, this axis, this is the distance from the center. Look, in this case, outside the conductor, this b was varying exponentially. Okay, outside the conductor this b was varying exponentially, but inside the conductor there is a linear relation, and in case of this is a linearity that we have arrived over here. In this case we will have from the central part this magnetic field as if it is linearly increasing up to where it is increasing up to the surface level, this level, और इसके बाद जब बाहर जाएगा, ठीक है, it will start to exponentially decline, and there this r is equal to a. Okay, at the surface there will be the maximum magnetic field that you will be able to get, and as it will move from the surface the magnetic field will decline, not
not linearly but non-linearly. You can explicitly you can say that there will be an exponential decline. So यहाँ तक करके we just arrived to our end of our discussion, and thank you for your attention. Okay, I think there were so many problems. I think regarding ये chapter को related बहुत सारे confusion रहते हैं. I think that I was able to give some impetus to your problems that can be resolvable, and that will benefit in your board examinations. Okay, so we are the BookmarksEducare, where education touches excellence. ठीक है, our contact number, that is the 9230648161, 9230648162. You are feel free to call over here regarding any doubt regarding admission. You are feel free to call. Our website is www.bookmarkseducare.com. YouTube link, that is the youtube.com. You will just go into the YouTube, you will type BookmarksEducare, and we are readily available there. Okay, okay. Facebook link, that is the facebook.com/@bookmarkseducare, and Instagram, you go to the Insta, you type BookmarksEducare, we are there. And remember, mentorship program, our mentorship program is live now. We are eagerly waiting for you to come, because so many people are getting enlisted. So hurry up. In the January we will come with exciting offers in the new year, and that will be the as of now this is a surprise, but that will be a gift, a special gift to you people. Study hard, stay motivated, stay well, take good care of your health. We are the BookmarksEducare. We are with you. Okay, so stay focused. Thank you.